There is no escape. Settle down. Torn to oblivion. Illusion shattered. Wind strike. Bow your head. Ha! There is no escape. Silence. Illusion shattered. The wind knows me. Settle down. Inazuma shines eternal. Time to go. Clear weather all around. Let's hope you'll put up a good fight. Here comes another. Wind strike. Here comes another. Silence. There is no escape.
Let's hope we pull up a good Into fight. the wind. Settle down. Add ast. Thank you for Add astra. Time to go. Come on! Show me your courage! Bow your head. There is no escape. One with nature. Settle down. Let's hope you pull up a good fight. Fast. Into the wind. Silence. Huh.
Alright, Come on! let's finish Show this me your fast. courage. Yeah. Strike a pose. Shine down. Yeah. Yeah. Settle down. Let's hope you fight. Here comes Wind another. strider. Yeah. Let the mighty be humbled. That was quick. The show begins. The mortal plane. A fleeting dream.
This realm. If you ever
Fry! The perfect distance! Going somewhere? Finally, to the ferry. Cut down. Picked the wrong test subject. The perfect distance. My blade! Going somewhere? The perfect distance! Picked the wrong test subject. Going somewhere? The perfect distance! To the ferry?
try. Where do you Perfect think you're distance. going? Finally, perfect distance. Where do you think you're going? Goodbye, but we'll meet again. Where do you think you're going? We'll meet again.
badass trap. Everyone can hear your voice. Adventure time. Let's light it up. Freeze! I'm going in. Cool it! Hey! Yeah. Hit, ha, hit, hit. Speed of light. Don't blink. Huh? Incoming. Hey! Don't get frostbite. Speed of light. Cut to the chase.
Dodge this! Speed of light! Hey! Don't blink! Incoming! Speed of light! I'm going in! This moment will be frozen in Incoming! Nowhere to hide. Burn! Don't blink! In adventuring, as in business, you always have to seize the opportunity while it's there. Speed of light! Hey! Ha! 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 Yeah! Ha! Ha! Don't blink! Ha! Ha! Ha!
Ad Astra. Thank you for Come on, enough procrastinating. Benny's adventure team, assemble! Or not. Freeze! Speed of light! Hey! Don't blink! Everybody stand back! Oh, so sorry. With sword comes shadow. Speed of light! Hey! Cool it! Let's light it up! Incoming! Freeze! Dodge this! Speed of light! Yeah! Ha! 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 Incoming! Don't push your luck.
Freeze! Ah! Don't get frostbite. Teamwork is dreamwork. Cut to the chase. Don't blink. Dodge this. Let's light it up. Freeze! Is that all you've got? Ha! Ha! Dodge this. Incoming. Retribution! Nowhere to hide. Don't blink. Freeze! Let's light it up. Speed of light. Right idea. Wrong time. This smoke will be frozen in time. Dodge this. What's the freeze? Wish me luck. What's the hurry? Dodge this. Cool it. Let the show begin. Incoming. Let's light it up. Come on, we can do it. Speed of light. Hey! Dodge this. Sister. Cool it. Everybody stand back. Let's dance. Don't push your luck. Don't blink. Oh, so sorry. With sword comes shadow. Hi. I'll protect us.
Freeze! Let's light it up! Ah! Cut to the chase. Off we go! Adventure time! Off we go! Let the show begin. Incoming. Hey! Ha! Ha! Yeah. Dodge this! Cool it! Speed of light. Huh? Huh. Hit. I'm going in! Don't get frostbite! Freeze! Don't blink. Ah! Ha! With swords from shadow. Hit. Speed of light. Hey! Hit. Ha! Yeah. I'll protect us. Huh? Don't blink. Huh? Ha! Hit. Ha! Hit. Hit. Speed of light. Ha! Ha! Hit. Ha! Dodge this! This doesn't look good. Let's. Has everyone stopped singing? Nowhere to hide. Speed of light. Hit. Yeah. Huh. Let's light it up! Teamwork is
Freeze! Let the show begin. Speed of light. With sword comes shadow. Incoming. Sister. Cool it! Let's light it up! Why do they never miss? Dodge this! What's the hurry? Cool it! Got lucky that time. Speed of light. I'm going in! Freeze! This moment will be frozen in time. Don't blink! Hey! Nowhere to hide. Speed of light. Dodge this! Let's light it up! Incoming. Change of plan. Hey! Huh! Got lucky that time. Freeze! What's the hurry? Cool it! Speed of light. Adventure time. With sword comes shadow. Incoming. Teamwork is dreamwork. Don't blink.
We really outdid ourselves this time. All those samurai houses packed with goods. We really hit the jackpot. I mean, besides that one house. You haven't seen anything yet. There'll be a lot more where this came from. Today's just the beginning. I'll be leading you all on an epic journey of pillage and plunder that will go down in Hoarder history. You demand, boss. These seem like the treasure hoarders we're after. Let's teach them a lesson. Another test subject. You're open. Freeze. What's the... Don't get frostbite. Let's light it up! Incoming! Hey! Oh, there goes all the Mora. We worked hard to steal that, you know? Come on, boss. Think of something. Not bad, kid. You ever think of joining the treasure hoarders? We could use someone like you. Kurosawa. Oh, I remember. So he's the one who sent you after us, huh? Just our luck. I knew we shouldn't have hit that place. So what did you see inside? Was it stuffed with food supplies? Food supplies? You kidding? That place was a complete mess. All we found was a strange-looking box, hopefully with valuables inside. I didn't want anyone else to see it, so I was planning on opening it myself once we got back. But now that you've caught us, how about we make a deal? That little box for our freedom. What do you say? You've got a deal. Now show us what's in the box. Huh? What the? There's nothing in here but IOUs. Yeah, a lot of them too. And they all seem to be made out to the owner of a general goods store, a Miss Aoi. We better talk to this Miss Aoi and get to the bottom of this. As for you guys, you're free to go. Just pray that our paths don't cross again. Yes, of course. So, we redeemed ourselves for some IOUs. Does that mean we broke even? Shut it. Let's just get out of here.
In adventuring, as in business, you always have to seize the opportunity while it's there. Welcome to Tsukumomono Groceries. We've got everything you need. Can I help you find something? Or perhaps there's something you want to inquire about? Ah, so you're friends of Kurosawa, I take it? Perhaps you're here to pay off his debts. Whoa, whoa! Let's not get ahead of ourselves. We're just here to learn where they all came from. How did Kurosawa end up owing you so much money? Did he buy anything super expensive here? Let me think. Kurosawa would come regularly to purchase large quantities of foodstuffs. He'd always put the payment on his own account. However, the price of provisions began to skyrocket recently, and his salary was no longer enough to cover the cost. So, he started writing out IOUs to cover whatever he couldn't afford of the usual amount. So that's how he was getting those emergency provisions. But why did he have to purchase a usual amount? If the prices increased, couldn't he just buy less? Well, if you think about it, the citizens receiving the emergency provisions must have been carefully calculating how much they needed to sustain them each time. Kurosawa thought that it would be quite the disappointment for them if they found they didn't have enough, especially after such long and careful planning. So he deemed it necessary to take on the debt rather than let the people down. Wow. Kurosawa was purchasing all the emergency provisions at his own expense. And no one ever appreciated what he did. They just complained and held him accountable. People's attitudes will always reflect their circumstances. In the face of hardship, nobody cares to think twice. If you ask me, had Kurosawa told everyone the truth about the supplies from the start, then there wouldn't be such a severe backlash now. Of course, I'm sure there would still have been some unrest. What he was doing was truly a thankless deed. As for why he chose to spend his own money on emergency provisions and never tell anyone, I'm still not too clear myself. If you're still curious, why don't you go ask him yourself? I see. That reminds me, it seems that his vision was recently confiscated. Most unfortunate. If he doesn't clear the debt on his name, he'll have no choice but to sell that sword that is so dear to him. Sword? What sword? Oh, didn't he tell you? He possesses a very valuable blade. He's carried it for years now. I've asked him about its origins. He told me that it was a gift from his father, that it was too precious to sell. In hindsight, I regret that I never made an offer on it. Everything has its price, at least that's what I think. Why don't you ask him about the sword yourself? Perhaps it'll even provide you with the answers you're looking for. Oh, but before you go, if you would kindly settle today's bill. But we didn't buy anything. Information is also a kind of commodity, wouldn't you agree? Don't worry, I won't charge much for information about Kurosawa. Nothing we ever discussed was explicitly confidential anyway. Oh, let me think.
2,000 mora should be a fair price. At least we now know where the emergency provisions are coming from. Plus, we found out that Kurosawa has a priceless sword in his possession. Let's go talk to Kurosawa again and see if he can remember anything. What are you doing here all by yourself? Where did those other two go? I presented them with a choice. Either they left or I drew my sword. They left. It turned out to be a real time saver, actually. Perhaps I should start using it more often. Did you manage to track down the treasure hoarders? Everything I said was true, right? That just about sums it up. It turns out that you really were distributing emergency provisions, but they were all purchased at your own expense. Strange. Is that really the kind of person I was? I don't really have any such recollection. Even after all you've told me, I still don't remember anything. Why was I purchasing emergency provisions for everyone? And why would I put myself in such a difficult situation? I really don't understand. But I cannot deny that when I brandished my sword to scare those two away, I could sense that my body was somehow reluctant to do so. This sword was once wielded by my father. I remember once when I was young, I wanted to sneak out with the blade and show it off to the kids next door. My father ended up catching me in the act and scolded me severely. What did he say? I can't seem to remember that either. It would seem that I forgot many important things when my vision was taken from me. So many memories gone. Forever. No matter how hard I try to remember. All I can remember now is my father telling me that this blade bore his life's creed. Before he passed away, he placed the sword in my hands and said to me, "With this sword, you should..." Hey, if you look carefully, there seems to be some words engraved on the hilt. Can you recognize the words? Virtue and justice? Somehow those two words seem to explain everything now. Taking on seemingly endless debts to make others happy. I guess that must have been my greatest ambition after all. But what use are virtue and justice? I purchased the provisions for those in need. And look how things ended up. The Tenryo Commission seized my vision. And the very people I was so desperately trying to help refused to understand me. And the irony of all of it is, I somehow still felt sorry when threatening them with my blade. I'm incapable of being a good person, yet I'm equally unable to be bad. I don't know what to do with myself. Yet another troubled soul. When we get the chance, let's speak to Toma about Kurosawa's debt. The Yashiro Commission would surely help cover his expenses. In any case, we must never let him sell off that sword. Yeah, seems like losing all ambition is a terrible experience.
Fortunately for us, you don't have a vision. Let's go find the next poor soul. The third person who had their vision taken is supposed to be a famous sword master around these parts. Paimon heard that he's the present-day master of Meikyo Shisui art. Sounds pretty impressive. This is his dojo. Luckily, there's some people around. Let's go talk to them. Nanako, don't worry. Sensei will be fine. Those thugs that challenged the dojo were strong, but he fought them all off in the end, didn't he? Maybe, but I'm still worried about him. Things have gotten dangerous before in the past, but it's never shaken him. This time, though... It's just because he's been possessed, that's all. Once the exorcism has taken place, he'll be right as rain in no time. Hey there! Did something happen? Who are you? I don't care whether you're trespassers or just here to harass us while Sensei is impaired. Get out of here immediately! Don't make me draw my blade, or you won't live to regret it. No! You got it so wrong! We just came here to... Disciples? Yep. We've heard all about the mighty master of Meikyo Shisui art. It's the whole reason we came all this way, to seek him out and ask him to train us. But then we got here and overheard you talking about how he got possessed or something? From the way you're dressed, it doesn't look like you're from around here. Please, accept my apologies. We've had so many people trying to cause us trouble recently that we're on high alert. You haven't arrived at the best of times, I'm afraid. Sensei got possessed recently, and he's still recovering. He's not able to take on any new disciples for the time being. I see you are earnest in your pursuit. Okay, how about this? My fellow disciple Nanako and I will explain Sensei's situation to you in a little more detail. Then you can decide whether to stay or to leave. Sensei's name is Domon, a name I'm sure you've already heard. Though self-taught, he mastered the art of the sword to a high level. He then proceeded to defeat many other prominent sword masters, never losing a single fight. He once said that his goal was to become the best sword master in the world. And so, even while training us, he continued to hone his own art. His fervor truly inspired us, and we trained hard, determined to keep up with him. But then... Not long ago, Sensei had his vision taken away. He hasn't been the same since. He says the strangest things over and over, and he refuses to let us train. Junya and I have discussed it, and we both think that he's been possessed by an evil spirit. So, we've asked the Shrine Maidens from the Grand Narukami Shrine to perform an exorcism. But if I'm honest, I still have my doubts over whether he'll completely recover. The Grand Narukami Shrine? What's that? You haven't heard of it? It's the largest shrine on Narukami Island. The head shrine maiden is reputed to have very close ties with the almighty Shogun herself. Not that we'd have any means of involving the head shrine maiden, of course. But even one of the ordinary shrine maidens from the Grand Narukami Shrine would have clear power and authority to perform an exorcism. So don't worry, Nanako. Sensei is going to be just fine. The exorcism will take place this evening. You're both more than welcome to come and watch if you're interested. So,
can cause possession? Guess we should come back this evening and see for ourselves. Shh. So you decided to come. It's a good thing you didn't arrive any earlier. You would have had to witness Sensei in one of his fits of madness. Just now, when Nanako was attending to him, she heard him whispering a few names to himself. When she asked him who the people were, he suddenly looked panic-stricken and pushed her away. It looked like he was in great distress. He was covering his ears and looking frantically around him with bloodshot eyes. All the while he kept calling those names. Some of them we knew, others we didn't recognize. But they all seemed to be the names of sword masters he had defeated in the past. One of them was Anzai. He used to be a fellow disciple of Sensei's, his senior, in fact. But Sensei defeated him in a duel many years ago, and he has been a wanderer ever since. Sensei wouldn't stop calling his name. Thankfully, the Shrine Maidens managed to subdue him, so the exorcism can finally continue. The ritual has now begun. All we can do is patiently await the result. Here's hoping Sensei will be back to his normal self very soon. Please, excuse me for a moment while I fetch some water. If he wakes up, he is sure to be thirsty. Huh? Who's that sneaking around? Uh-oh. Could they be here to mess up the exorcism? We won't let them get away with it. Come on, let's go after them. Seems they aren't here. Is this definitely the right place? Let's look a little further up. Aha! Suspicious person sighted! That's... How did you catch up with me so quickly? Are you sure you're Domon's disciples? You move even quicker than he does. Unless... I guess it's been a few years. Maybe his skills have improved again. Excuse me? We're the ones asking the questions here. First off, who are you? And what are you doing sneaking around these parts? You seem like bad news, mister. Bad news? I'll have you know I trained side by side with Domon back in the day, long before you ever showed up. I don't care to talk about that time anymore. But if you must know, I am Domon's senior. His senior? Wait, that means you must be... Anzai? Yes, that's me. Because I don't wish to see Domon or anyone else associated with him ever again.
When we were young, we trained under the same sword master, studying Make-Yoshi Sui art together. I had begun training 5 years before him, and everyone looked up to me as a steady and dependable older disciple. Practitioners of Make-Yoshi Sui art seek to achieve stillness of mind, freedom from all agitation. So the majority of disciples are indifferent to rank and reward. I was no exception. But Domon was different. The first thing he did when he joined was go straight to our sensei and ask him, with a beaming smile on his face, how to become the best in the world. Sensei scolded him and told him that the art of the sword should not be used for such vain ends. Sensei said that coveting the title of the best sword master, barely days into his training, showed that he had a fickle mind, and that this would impede him from ever mastering the blade. I thought so too at the time, but Domon began making swift progress in his training and even started catching up with me. Only then did I realize that it was Domon who had long since freed his mind from all agitation. He was consumed by his singular desire to become the best in the world. He sought nothing less than perfection in the art of the sword, and nothing could deter him from this goal, no matter what stood in his way. Sure sounds like he meant business. So how come you don't want to ever see him again? Because until he arrived, I was convinced that I would succeed our sensei as the master of Make-Yoshi Sui art. Of all the disciples, I was the most gifted. I had trained the longest. Everyone had high expectations for me. Domon's arrival changed everything. When we sparred, I lost not just the match, but my pride and my status too. I fled the dojo that day and never looked back. Later, I heard that he sparred with Sensei too. Sensei was advanced in years by then, and unfortunately that match used up every last ounce of energy in his body. After that, I wanted nothing further to do with him. Deep down, though, I still respected his mastery of the blade and his commitment to the art of the sword. So, when I heard rumors that he had lost his mind, my first reaction was to dismiss them as false. How could he, of all people, have lost his mind? His mind was the sharpest of them all. He had practiced Make-Yoshi Sui art to perfection. I decided to quietly come and see if it were true. Then, to my complete astonishment, I heard him call my name. I thought mine was a name he had long since forgotten. So you see, I came here not to cause him any harm. I just wanted to see for myself. Okay, you've heard my story. You should get back now. The exorcism is probably finishing. Seems like we got it wrong this time. He wasn't here to mess up the exorcism at all. Still, Paimon's not sure we should bring him back with us. Let's go see how the exorcism's coming along. You're saying he isn't possessed? Does that mean he's just lost his mind? But how is that possible? No, I refuse to believe it. Something's clearly wrong. Nanako, please, try not to get agitated. I am sorry. With what powers I have, I can find no sign of any malignant spirit having possessed Domon. But spirits may take a myriad of forms in this world, many of which I cannot claim to have witnessed myself. Thus, I dare not rule out possession with complete certainty. And all is certainly not lost, for I received word not long ago that Lady Yai has taken an interest in your sensei's case. Lady Yai? Is that the same Lady Yai that I think you mean? The head shrine maiden of the Grand Narukami Shrine? That's wonderful news! Then Sensei will be sure to recover. Correct.
Lady Yai is most knowledgeable indeed, and has abundant experience in the exorcism of evil spirits and aversion of great calamities. I am unable to say for certain whether an evil spirit has possessed your sensei, but Lady Yai can give a conclusive verdict. Excuse me, Miss Inagi, but I must ask, should we prepare a greeting gift for Lady Yai? That won't be necessary. All that is required of you is your timely arrival at the Grand Narukami Shrine. Lady Yai does not like to be kept waiting. I must leave now, but we will meet soon at the shrine. I wish Domon a full and speedy recovery. Who'd have thought Lady Yai herself would have taken notice of our sensei's case? Do you mean to say that Sensei isn't renowned enough to deserve Lady Yai's attention? No, that's not what I meant at all. You misunderstand me. I just mean this is Lady Yai, the head shrine maiden. She has direct and close contact with the almighty Shogun herself. Anyway, you should join us too, tomorrow. Given that you've traveled all this way just to meet our sensei, we, the disciples of Meikyo Shisui Art, will do our best to help you. Sure! After all, everyone seems pretty excited about Lady Yai. We're curious to meet her too. Who knows? Maybe we'll be able to find out a thing or two about the Raiden children from her.
क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? इग्नोर कर रहा हूँ, नल्ला इग्नोर कर रहा हूँ। अच्छा भाई ठीक है भाई, इग्नोर मैं कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, हम ही बुरे हैं ना। तेरे को बात करनी तो डीसी पे नहीं ना आ सकता है? नहीं आ सकता डीसी पे ना, ठीक है। एक्सेस दिया तू वीसी का? ना है तेरे पास एक्सेस, बोलेगा झूठ तू। रुक देखने दे मुझे। रोल्स 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 कहाँ गया भाई? ओनर एडमिन, एडमिन में कौन है अभी? एडमिन के पास एक्सेस है आई थिंक। नहीं एडमिन के पास नहीं है। मॉडरेटर्स, मॉडरेटर्स में कौन कौन है? तो बोल तो सकता था कि मेरे पास एक्सेस नहीं है, तो बोलना भी नहीं है भाई, बैठे रहेंगे मुंह फुला करके, लड़की बन रहे हैं साले। ये एक्सेस नहीं, मेरे को एक्सेस दे, तो देता ना भाई, तो मुंह फुला के बैठे रहेंगे। वाह मेरे डिस्कॉर्ड में है भी नहीं, लीव मार दिया है ना। आ भी नहीं रहा तेरा आईडी। ठीक है भाई, मेरे क्या है, मत आओ। लाइव का एक्सेस तू अभी तक नहीं दिया तो बोलता ना भाई तू कि मेरे को लाइव का एक्सेस नहीं दिया है, दे दे। बोलेगा नहीं, मेरे को पता नहीं रहता किसके पास एक्सेस किसके पास, मेरे को डिस्कॉर्ड के बारे में कुछ नहीं समझ में आता। बोलना ना चाहिए तेरे को। अब कितना बार बोलूंगा एक्सेस दे दे। तो तू डिस्कॉर्ड में रहेगा तब ना एक्सेस दूं, तूने तो लीव मार के रखा है। मेंबर्स, तेरे को ढूंढने दे, मेरे को शो क्यों नहीं करता तेरा? ले मिल गया होगा तेरे को एक्सेस। मिला एक्सेस? मिल गया ना? बस बाद में मेरे को मत बोलियो कि ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है भाई। न्यूलेट बिल्ड नहीं रखा है आपका? न्यूलेट अगर बिल्ड होगा तो काफी ठीक है, चल जाएगा। एक सील्डर चाहिए होगा मेरे को, फर्स्ट हाफ में सील्डर की जरूरत पड़ेगी मेरे को। आई थिंक जियो कैरेक्टर भी, जियो कैरेक्टर कोई बिल्ड है? कच्ची ना, मे बी। बाकी हाइपर ब्लूम कावे के साथ ठीक है। कावे मेरे को खेलने नहीं आता, अलेथम कावे बोल रहा हूँ, अलेथम मेरे को खेलने नहीं आता, फिर भी ट्राई कर सकते हैं। डीसी का साउंड बंद है डीसी का। एकदम का रोटेशन ये भी मैं समझाऊं। रहने दे भाई, मैं ट्राई कर लूंगा। There is no escape. The wind knows me. As one with wind and cloud. The tides beckon. An oversight on my part.
बैक और टॉस करना पड़ेगा मेरे को। Silence. ये सारे भाई ये दुनिया के Time to shine! Bow your लेकिन head. मैं नहीं लड़ूंगा मैं Care for Your a dance. coming was foretold. Be sanctified. Shine down. One with nature. Fallen leaves. Adorn my night. Justice is blindsight. Settle down. वो There is no escape. Wind strike. Shine down. How dare you! Let the mighty be humbled. Never again. काजुआ पहले वो पायरो वालों के सामने निकाली मत, वो पायरो ही सोल्व करेगा वैसे भी कुछ फायदा नहीं। बेचारा आपका काजुआ मर गया मेरे से बताओ यार। फेवरेट कैरेक्टर आपका। बहुत मारते हैं ये जो ये दोनों का कॉम्बिनेशन ना बहुत डेडली कॉम्बिनेशन। साले उठा उठा के पटकते हैं। कॉम्बो अटैक मारते हैं भाई, कॉम्बो अटैक बताओ। एक ऊपर Illusion shattered. As one with wind and cloud. Be sanctified. Let the world come on! ये लगी टेलीपोर्ट होते रहे। Bow your head. अगर एक भी अटैक मेरे को लगता है एक कहाँ भाग गया था भाई? Care for a dance? Settle Dance down. with me. Let the mighty be humbled. ठीक है मतलब ठीक ठाक बिल्ड हो जाएगा। सही तरह टेस्ट में हो जाएगा। Shine down. Time to shine! ये माँ Fine. छोड़ दे भाई। Fallen leaves. Adorn my night. निकल Now you जाता है shall भाई। perish. Silence. None over the tides beckon. अल्टीमेट एक जरिया है बच सकते हैं। आई फ्रेम Illusion shattered. Let my name echo in song! Bow your head. Clouds high. The Right, birds fall. कर दिया। Inazuma shines eternal. बाहर कर दिया। एक बार समझा दूं क्या? कैसे कैसे बता बता। करना नहीं है स्किल से दोनों को होल्ड करके मार्क करना है। हाँ मेरे को शिंगू का स्किल अल्ट मार, पूकी का स्किल, फिर एलिस का टैग अल्ट पहले 2 सेकंड बेसिक अटैक कर, फिर स्किल मार, फिर बेसिक अटैक करते रहे। ओके मैं एलिस का स्विच करेगा ना तो पहले अल्ट मार, उसका स्किल मार। ठीक है। I see everything! Temple of Wisdom! Ring cutter! Know my soul! Out of my way! The process of elimination.
Here you are. Hey! Witness the power of Gugwa. Know my sword. Huh? Sharing my knowledge. Committed to memory. Our bond is strong. Well, Know my sword. Rain cutter. defract. I'll settle this. Dissipate. Looking for a fight? Quicker. नहीं खेला हुआ है। Rain outlines your fate. Let me weave you a verse. Committed to memory. The temple जितना of पढ़िए wisdom. तो थोड़ा सा सही होगा। सारी कैरेक्टर ध्यान A process of elimination. नेटन का वो जो बॉस है वो दिक्कत देगा ना। उसको एलिमेंट चाहिए, उसको ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट चाहिए उसको वो सीढ़ी तोड़ने के लिए। अरे उसके आईडी में मैं किया था, सन ऑफ गॉड है ना, उसके आईडी में किया, एलेक्स हमसे हो जाता है इजीली। उसका यही रोटेशन करेगा ना, आराम से हो जाएगा। हाँ, उसका शील्ड टूटने के बाद तो आराम से होता है। हाँ, हाइपर ब्लूम, नहीडा का, शिंतो का, का स्किल, एलेक्स खुद बहुत ज्यादा एलिमेंट है जहाँ पे। ईएम दे रहा भाई, क्या करूँ ईएम का? इसमें को अब सेकंड फ्लोर पे कौन सा आएगा? अच्छा वो ड्रैगन आएगा ना। एलेक्स हमके काम आएगा रे, ईएम ले ले। हाँ ईएम ही लिया मैंने। अरे पिछले लिया रे, देखा मैंने। हाँ ईएम तो लिया था भाई, क्या पता वो थोड़ा। ठीक है भाई लेना। बहुत काम आएगा, उनका डैमेज पड़ेगा। अरे क्लियर करने की। अबे तेरा आवाज क्यों तेज हुआ एक बार? इससे लिया था। There is no escape. अरे भाई क्या बात है? इनको छोड़ दे। तुझे कैसे मारते हैं? भाई फीवर अभी मरता मैं कसम तेरा Illusion shattered. Torn to oblivion. Fallen leaves, adorn my night! Lightning, killing song. Showing you. Let the mighty be humble. Settle down. ठीक है। एक मिनट। इनको गोल करने के लिए किसको आता है शॉप? पीसी वाले बंदे के लिए सही है साओ यार, फोन वाले के लिए नहीं सही है। शाओ मेरे को आता है भाई, फोन पे रैपिड मूवमेंट ये वो होता है ना, एक मूवमेंट होता है ना, तेरे को पता है ना वो वाला साओ के लिए।
Wait. Huh? No. Whatever. बंदर ही बनना है बताओ खेलते टाइम पर और कुछ ठीक है तो तूने क्या ऐसा करा जो किन ने तुझे किक मारा है मैं कुछ उसने तो पूरा डिस्क्लेमर लिख के रखा है कि कोई मेरे बारे में इस सवाल के बारे में पूछे नहीं कि जिसको ऑब्जेक्शन है वो जा सकते हैं मेरे डिस्कॉर्ड से सीधा बोल दिया भाई उसने करा तूने क्या है कुछ भी नहीं किया वो कल रात को स्ट्रीम कर रहा था मैं ऐसे ही स्ट्रीम पे गया ऐसे ही मजाक में मैं लिखा जो डेली लिखता हूँ Wait. अगर ऐसा टाइम पर रोज No. ना कल तक Whatever. हाँ तो किसी को रोज उंगली करेगा तो गुस्सा आएगा नहीं भाई जाहिर सी बात है एक बार बोल दिए 2 बार बोल दिए बहुत आदमी बर्दाश्त कर लिया डाओ अब उसको समझेगा तुम डेली का खुराक डेली बोलते रहेंगे उसको तो बर्दाश्त करता रहेगा तो कोई नहीं करेगा The scribe's work कोई is नहीं simple, करता है which is exactly why I took the position. तो बोलने से नहीं ना होगा आदमी कितना भी बर्दाश्त कर ले है तो इंसान ही ना कितना एक लिमिट होता है बर्दाश्त करने का क्या ही बोलूं मैं Everyone hold hands. No, my sword! एनर्जी इशू हो रहा Get with me! Ring है cutter! तो बस नहीं आप Let's change tactics. सर्दी भी हो रखी है Shine down! Time to shine! Strike a pose! The tide beckons. Clouds high. The birds come. Bow your head. Inazuma shines eternal! Wind strike. Let the mighty be humbled. Silence. I see everything. Rain outlines your fate. Huh?
कैरेक्टर है 15-20 हजार फिर भी मार देगा। तेरा आवाज आई थिंक डीसी पे जा रहा है मेरे ख्याल से। हेलो, बोल तो तू कुछ। डक्स, हाय डक्स, डक्स, हेलो। हाँ बोल बोल। बोल तो कुछ दे, मेरे को चेक करना है। माइक टेस्टिंग 2 3 4 10 12 100। अबे हाँ बे, तेरा वॉइस जा रहा है, ये कैसे हो गया? लाइव पे आके देख तो तेरा वॉइस जा रहा है कि नहीं? नहीं मुझे तो नहीं सुनाई दे रहा ठीक से। कोई शॉट बस। वही देख रहा, वही देख रहा। ये जाने दो ना, नहीं जाने दो। अभी फील्ड पे पहले आप जा रहा है भाई, जा रहा है भाई, जा रहा है। मतलब मेरे को क्यों नहीं सुनाई दे रहा? जा रहा है भाई। फोन प्लस स्पीकर टेक्सेंस एचपी सेंस नहीं है क्या? एचपी 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 अभी कौन सा पीस दे रहे हो आप? ये वाला सेट फिल्टर करके हंटर सेलेक्ट करना दे। नहीं, ऑफसेट एक एचपी गॉबलेट लगा रखा है, तो ऑन सेट में एचपी सैंड्स मिलना मुश्किल है। तो कोई तो बोला सेट फिल्टर करके हंटर सेलेक्ट कर, सिर्फ हंटर के पीछे दिखा चलेगा है कि नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है भाई। ऑन साइड गॉबलेट भी नहीं है ना ही गॉबलेट है ना ही सर्कुलेट। एचपी का एक, हाँ एचपी का एक गॉबलेट है। ये गॉबलेट अच्छा रोल अगर गया थोड़ा बहुत। लेवल 4 का क्रिट डैमेज गया नहीं है, मटेरियल ही नहीं है। वाओ, मटेरियल नहीं है है तो छोड़ दे, ठीक है रहने दे, इसी से काम चलाना पड़ेगा। बस मेरे को चिंचू का एनर्जी फिक्स करना है। चिंचू का एनर्जी फिक्स हो जाएगा ना, मेरा काम हो जाएगा। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इसके एनर्जी। वेपन लेवल 90 है क्या? हाँ वेपन लेवल 90 R4 है। ये सर्कुलेट चेंज करके एनर्जी सैंड्स डालूंगा मैं। एनर्जी सैंड्स डालूंगा ना तो काम हो जाएगा बस। एनर्जी सैंड्स है ना, वो जो सारा नहीं रखा है ना, तो उसका सर्कुलेट दे दे अगर उसका सर्कुलेट नहीं अटैक सर्कुलेट सैंड्स भाई, सैंड्स सर्कुलेट बोला। हाँ मुंह से निकली है। सर्कुलेट क्रिएट रेट है, क्रिएट रेट 11%। मुझे सारा के पीसेस दे रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं ना आपको? अभी अभी के लिए दे दो, बाद में चेंज कर लेना। क्योंकि एनर्जी इशू हो रहा है थोड़ा सा एनर्जी ज़्यादा रहता है ना, तो रोटेशन में ठीक रहता है। हाँ चलो ठीक है। बस शील्ड को कितना 11-1200 ही अटैक चाहिए, ज़्यादा चाहिए भी। C6 रहता है तो अटैक सेंट्स आप यूज कर सकते हो। C6 सिंशु नहीं है तो फिर आपको ये यूज करना है, क्या बोला जाए, आपको ये यूज करना है, एनर्जी रिचार्ज सेंट्स यूज करना है एनर्जी वेपन के साथ। और मैं क्या बोल रहा हूँ, रीस्टार्ट पूरा स्टार्टिंग से कर, नहीं तो उसका बिल्ड चेंज नहीं होगा। 180 एनर्जी वाला ही बिल्ड रहेगा उसका। रीस्टार्ट करना पड़ेगा पूरा। ऐसा है क्या? वो कॉन्स्टिपेशन 20 भाई दम कर देते हैं नाक में। आरले लेके जाऊं क्या फर्स्ट चेंबर में? फर्स्ट में मत लेके जा रहे, वो पायरो एनिमीज है ना, उनके सामने कुछ नहीं करेगी। हाँ पायरो एनिमीज के सामने कुछ नहीं करेगी? क्या बात कर रहे हो? नहीं करेगी, ज्यादा नहीं देगी। उनके पायरो कितना 70% कुछ तो पायरो रहते होंगे, 75%। वहाँ से देगी डैमेज। वो 1 लाख जहाँ पे मारती है वहाँ पे सिर्फ 15-20 हजार, 30 हजार मारेगी। 30-40।
इसमें एक जियो कैरेक्टर चाहिए होगा, बिना जियो कैरेक्टर का नहीं हो पाएगा। पहले फर्स्ट और सेकंड चेंबर ट्राई कर, फिर थर्ड चेंबर के लिए जियो कुछ लेके जा। राइडन की जगह फिर कसिना लेके जा। फर्स्ट और चेंबर पहले 3 स्टार कर दे, क्योंकि वही सबसे हार्ड है। तीसरा वाला तो भाई वुल्फ लॉर्ड एक बार गिर गया तो गिर गया, फिर कुछ नहीं कर सकता। और सेकंड चेंबर में वो एक बार बॉस क्लियर हो गया ना नेट लैंड वाला, फिर तो भाई मजे ही मजे। बहुत इजी है वो भी, बहुत इजी है। लड़का क्या नाम है, ड्रेक। ड्रेक के लिए भी तेरे को एक वो कैरेक्टर चाहिए होगा, तो इसके लिए पहले ये फर्स्ट और सेकंड चेंबर कर ले। आयरन का स्किल के लिए तो सकता है दूसरा, पर उसका स्किल 15 सेकंड होल्ड आउट खाली बहुत मजे। देखो ड्रेक को मारने के लिए मैं क्या करूंगा, यूज कर लूंगा हाइपर ब्लूम टीम लेके जाऊंगा, ठीक है। उसके अंदर एक ये डाल दूंगा, क्या बोलते हैं, वो कैरेक्टर डाल दूंगा, पूजो सारा। क्या कहता है, क्या है हाइपर ब्लूम विद रेडर बहुत अच्छा काम करती है भाई, बहुत गंदा मारती है हाइपर ब्लूम विद रेडर। ये हम रेड ले जा सकता है, पर वो क्या पहले ये दो चेंबर पहले थर्ड का बात ये दो Illusion shattered. Fallen leaves. Adorn my Be sanctified. Pyro में ये रिट्राइव Shine dance with me into the wind. Bow your head. Let the mighty be humble. At least you were here to watch. Time to shine! There is no escape. Wind strike. As one with wind and cloud. Torn to oblivion. The tides beckon. Be not perturbed. Unscathed. An oversight on my part. Justice is blindsided. Illusion shattered. काजलों का भी नहीं निकालता, निकाल दिया, मर गया। Settle down. Be sanctified. देखा जाए तो बस शिंचो की एनर्जी प्रॉब्लम खत्म है। Rain cutter. Rain outlines your fate. Know my sword. Lightning purified. Diffract. Flicker. आई इसे मार दिया मैंने। लास्ट में करेंगे, ये हार्ड है। Our bond is strong. Witness the power of Gugwa. Know my soul. Grow, grow, grow! The Temple of Wisdom! Scatter. Dissipate. एनिमो का बर्स्ट चला गया क्या? Rain cutter. Out of my way.
rain outlines your fate. Let me weave you. Here you are. ये बहुत सारा है। Minutes to memory. Yes, Stand with me. The process of elimination. ये लेथन की टीम से आराम से हो जाएगा, इसलिए आराम से हो जाएगा। Flicker. बस थोड़ा सा लेथन स्किल बस साथ में यूज कर। अच्छा लेथम स्किल बस्ट खत्म हो जाएगा, नॉर्मल अटैक होल्ड करो। अच्छा ऐसा भी रहता है क्या? नहीं पता था मेरे को, लेथम यूज नहीं ना करता मैं। देखते हैं, आओ। ऐसे कैरेक्टर आपके पास हो गए अभी क्लियर करने लायक, अभी आराम से आप क्लियर कर पाओगे अगर आपके पास स्किल्स होंगे तो। आगे वो पहले यूज कर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा। With nature. Clouds hide. The birds call. Now you shall perish. The tide beckons. Bow your head. Shattered. Wind strider. Fallen leaves. Adorn my... Inazuma shines eternal. न्यूलेट तो यूज भी नहीं कर पाए। आ जाओ। अरे उतना कंफ्यूजन मत करो, मैं लेके जा रहा हूँ, लेके चले। हो गया तो ठीक, नहीं हुआ Witness the power. तो भी ठीक। a minute to memory. Sharing my knowledge. Lightning, purify. यार लेट कर दिया। मेरे को दिखाई नहीं वो। मेरे को दिखाई नहीं, दिखता तब ना, दिखाई नहीं मेरे को। Silence! Clouds hide. The birds call. Shine down. Now you shall perish. Let the mighty be humble! One with wind and cloud. Inazuma shines eternal. There is no escape. Be satisfied. तेरे को पता मैंने अपना अभी 36 स्टार कर लिया। हाँ खुद से भाई। हाइपर ब्लूम विद फेशियल से हुआ था मेरे लग।
मेरे सब में हाइपर ही ब्लूम, मेरे 1 चेंबर 1 2 3 सब में हाइपर ब्लूम, बस एक बंदा चेंज हुआ था। थर्ड फ्लोर में मेरे साथ थी फिशल, और सेकंड फ्लोर में आई थिंक डैंड्रो एमसी था मेरे साथ, और फर्स्ट फ्लोर में हाँ एक शील्डर था, लेला शील्डर। बाकी मेरी हाइपर ब्लूम की नाहिदा, कुकी, शिंशो, ये 3 टीम। बाकी एक जरूरत के हिसाब से मैंने चेंज कर दिया, बाकी सब संभाल लिया इन लोगों। फ्लोरेंट यूज कर सकता है तू, क्या दिक्कत है? फ्लोरेंट भी रख ले, वो भी हाइपर प्लस है, उसको थोड़ा बहुत ईएम पकड़ा दे, ईएम हैंड्स के साथ। लोरी Know my sword! Rain outlines your fate. Let me weave you a verb. Get with me! मार दिया भाई। उसका पहला अटैक बोला ना, आई फ्रेम करने का ट्राई कर रहे। वो नहीड़ा के अल्ट से आई फ्रेम करने का ट्राई कर, और एलाइथम को ऑन फील्ड रखो, उसका बेसिक अटैक ज्यादा तेज है अंदर से। नहीड़ा पूरा रोटेट करके एलाइथम। Time to go. Settle down. Clouds high. The birds Shine down! Now you shall perish! Ha! 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 The time beckons. Silence. Time to shine! Showing you strength! must remain calm. Born to oblivion! As one with wind and cloud, wind strike. तो दिक्कत है, वही तो टूटता नहीं। Bond is strong. Know my sword. Rain outlines your fate. Witness the power. The brightest flames burn Almost हो गया था। fast. 0.1% से रहेगा। कुकी का स्किल पहले मत मार, शिंचो का फर्स्ट के बाद कुकी का स्किल मार, उसका ड्यूरेशन भी फिर ज्यादा रहेगा कुकी के स्किल का। पहले शिंचो को मार। Time to go. Settle down. Let lightning echo in song. Into the wind. Fallen leaves, adorn my night. Illusion shattered. Inazuma shines eternal. Ha! The times beckon. Silence. One with nature. Clouds hide. The birds come. Now you shall perish. There is no escape.
sanctified. Settle down. ये क्या Everyone hold hands. No, my sword! Rain cutter! डेंडो अप्लाई हुआ ही नहीं Stand with me! Yeah, grow. मार ही देता है ये बंदा Time to go. Silence! Time to shine! Shower me with praise! The wind knows me. Fallen leaves adorn my night. Inazuma shines eternal! Ha! The tides beckon. Bow your head. Let the world collide! Silence! One with wind and cloud. Be sanctified. Torn to oblivion! 8 मिनट 37 सेकंड में खत्म हो रहा है अगर हो पाया तो नहीं दिक्कत ये वाला बॉस पहले ठीक से देखा Witness the power of Gugwa! Our bond is strong! Here you are. Grave over मरा था ना नहीं मरा था नहीं इसकी शील्ड नहीं टूटी मेरे को लगा कैसे Clouds high. The birds call. Time to shine! Now you shall perish! Let the mighty be humble. Settle down. Silence. Illusion shattered! Bow your head. The tides beckon.
outlines your fate. Rain cutter. Dissipate. मार दे रहा भाई। इसी एनिमी से मैं पिटा रहा हूँ बार बार। तो बोला ना उसका पहला अटैक आई फ्रेम करने का ट्राई कर, पहला आई फ्रेम हो गया तो दूसरा सर्वाइव कर देंगे कैरेक्टर। दूसरा वाला सिर्फ आई गेस 3-4 हजार डैमेज ही करता है, पहला वाला बहुत करता है रे 10,000 के आसपास। मतलब जितने भी हैवी कैरेक्टर हैं सारे मर जाते हैं, जितने भी ज्यादा एक्सपीरियंस सारे मर ही जाते हैं भाई। कितना डैमेज देता है ये। बोला ना पहला 10-11 हजार के आसपास देता है उसको, दूसरा 4-5 हजार, 15-16 हजार। Let's cause these. Silence! Let my name echo in song. Into the wind. As one with wind and cloud. Shine down. Inazuma shines eternal. Ha! Ha! Be sanctified. Bow your head. Justice is blind. Time to shine. Settle down. Wind strike. Clouds high. The birds come. Now you shall perish. Ha! Ha! नहीं ना होगा, रहने दो। ट्राई करते हैं, क्या दिक्कत है। करते हैं जब तक है उंगली में जान तब तक ट्राई करेंगे। उंगलियों में तब तक जब तक है जान। Know my sword. Witness the power. Flicker. गया भाई गया। Committed to memory, the Temple of Wisdom. I'll settle this. Know my sword. बहुत गया भाई। Rain cutter. तेरे को क्या लगा? Diffract. Get with me. This made her a little. Witness the power of Gurwa. Rain outline. Share my knowledge. Flicker. Out of my way. Scatter. मूव करना तो मेरा कैरेक्टर Know my अल्ट मारने के बाद खत्म हो जाता है। Rain cutter. No. ओह 3 स्टार इसमें मिल गया भाई। अभी थर्ड चेंबर कैसे करेगा ना, जियो ना भूख। स्पेशल कैरेक्टर चाहिए उसके लिए। लीव फॉर नाउ कर, फर्स्ट चेंबर अभी ट्राई कर। ये थर्ड चेंबर बहुत इजी है, खाली जियो और एक ये वो कैरेक्टर मिल जाएगा, हो जाएगा इजी। तो क्या कर, फिर लीव करके बोला वो कैरेक्टर जियो कैरेक्टर ला, थर्ड चेंबर पहले राइडर की जगह कच्ची डाला और कच्ची को
वो चीज सिंपलिसिटी दे दे, अगर मैं तो कुछ भी पकड़ा दे, सिर्फ वो चीज चाहिए मुझे। सिंपलिसिटी का कुछ भी पकड़ा दे उसको आर्टिकल, सिर्फ वो चीज हो बस बहुत अच्छा। और आयोग सेकंड आपने यही टीम रख, पर वो कैरेक्टर क्या क्या एक बार वो सिंडर सिटी नहीं है लगता है, नहीं है, नहीं है, हाँ नहीं है, नहीं है सिंडर सिटी। सिंडर सिटी है ही नहीं। रैंडम ले रहा हूँ, रैंडम डाल दिया। ये वेपन बेकार ही पड़ा हुआ है, थोड़ा सा एनर्जी बढ़ जाएगा। एनर्जी हंग्री ये भी करेक्टर। पुल डाउन अल्ट के कॉस्ट सकता है। All the world holds dear is but a backdrop of एक वो constant करेक्टर ना, motion. वो करेक्टर किसके साथ रहेगा? फिशल, फिशल कितनी है? वो कौन से C6 फिशल। I created another universe and founded paradise. For I, Fischl, and the princess and अच्छा बिल्ड कर रहे हो क्या इसको? फिशल को बिल्ड कर रहे हो आई थिंक, है ना? ज़्यादा है वेपन रहने देना, ठीक है, कोई दिक्कत बात नहीं, सारे कैरेक्टर को एनर्जी भरपूर देना चाहिए। अरे नहीं, अगर आपका वेपन है कुछ और तो यूज ठीक है, कैरेक्टर्स पे एनर्जी रखना मतलब पेयर के लिए अच्छा रहता है ना। ये वेपन लेवल अप है ही नहीं, लेवल अप है ही नहीं, वेपन लेवल अप है ही नहीं जो यूज हो सकता है। और ये क्रेट रेट वाला क्या करूँ यूज करके? इससे एनर्जी ज़्यादा रखूँ मैं। क्रेट रेट वाला दे दे रे, एनर्जी काम तो नहीं, क्रेट रेट वाला बहुत काम है, फिसल का ही डैमेज पड़ेगा। यार फिसल पे अच्छा खासा क्रेट रेट है। 45 नहीं देगी वो, क्रिट ही नहीं करेगी, और उससे 20 क्रिट डैमेज भी मिल रहा है पैसिव से, और क्या बोलते हैं उसका बेस अटैक भी ज्यादा है, तो फिशल का अटैक बढ़ेगा, फिशल वैसे भी अटैक पे ट्राई कर। अबे सो रहा है तो अभी के लिए बिल्ड चेंज करना पड़ेगा, अगर अभी सो रहा बिल्ड चेंज कर ठीक है, 130 एनर्जी फिर भी है, अभी काट दिया मैंने। यहाँ जियो कैरेक्टर लेके जाना पड़ेगा ना मेरे को। एक भी जियो बिल्ड नहीं है, जियो बिल्ड करना चाहिए आपको, एक कैरेक्टर जियो बिल्ड करना चाहिए, एक भी जियो नहीं बिल्ड करके रखा है। अब या फुल करके कर दो बिल्ड। डेंड्रो ट्रैवलर 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 नहीं, मैं कह रहा हूँ डेंड्रो ट्रैवलर चाहिए नहीं मुझे। फिशल 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 कहाँ है फिशल? मेरा ईएम बिल्ड है कि रेशियो पे है? आई डोंट नो, चेक कर, क्योंकि अगर नहीडा तू डीपीएस लेके जा रहा है तो उसका रेशियो चाहिए, देखना पड़ेगा। पार्टी ईएम पे बिल्ड रही तो क्या होता है? तो वो सिर्फ ब्लूम में काम आती है, नहीं तो हर जगह पे तेरे को सिर्फ रेशियो चाहिए। ईएम बिल्ड है, हाँ ईएम बिल्ड है यार, तरीके है, दिक्कत हो गई। सब डीपीएस इसको बिल्ड करना रहता है, ईएम नहीं बिल्ड करना। ईएम अगर 500-600 भी आप दे दोगे ना तो काम चल जाएगा। आप एक काम करना, इसको सब डीपीएस बिल्ड करो। ईएम वेपन ठीक है, वेपन ठीक है, लेकिन यही है कि आपको क्रेट बिल्ड करना ही पड़ेगा इसको, क्रेट ही बिल्ड में फायदा है। देख आज तक में है क्रेट पीसेस कुछ भी नहीं है
क्रेट पीसेस तो हैं और देखता हूँ अगर कुछ भी अच्छा क्रेट वाले पीसेस मिलते हैं तो। ये ऑफिस है। कोई बोलते हैं सीआर। अगर लाइव पे आवाज आ रही है तो मैं बोलना चाहूंगा क्रिट तभी चाहिए जब नहेड़ा हाइपरब्लू एग्रावेट स्प्रेड वगैरह में यूज हो रही है। ईएम तब चाहिए सिर्फ वो ब्लू टीम में, मतलब नीलू के साथ ईएम उसको मतलब समझ लो आप अगर ईएम पे यूज कर रहे हो तो सिर्फ एक टीम में यूज कर पाओगे। अगर सब डीपीएस बिल्ड करते हो तो मल्टीपल टीम में यूज कर पाओगे। कहने का ये मतलब है, समझे? ये कहने का मतलब है। नहीं हो पाएगा बे। ऑलमोस्ट हर उसमें था। नहीं हो पाएगा। मैंने ये फेदर से चेंज करा। सर्कुलेट नहीं है क्या? सर्कुलेट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर 100 क्रिट डैमेज आ जाए ना और 30 क्रिट रेड हो जाएगा बस। देखते हैं। देख लाने का ट्राई। वही तो कर क्रिएट नहीं कर रही थी कभी कभार, मतलब क्रिएट मारी नहीं, इसका पर्सनल डैमेज है ही नहीं, था ही नहीं। सेट फिल्टर करना, सिर्फ D4 के पीसेस सेलेक्ट कर, फिर तेरे को देखने में भी इजी होगा। सेट फिल्टर कर ले। ये एक पीस है, ये लगा सकते हैं। और ये तो ऑलरेडी अच्छा पीस लगा हुआ है। और ईएम का पीस है। और अटैक है, डैंडो डैमेज बोनस, इलेक्ट्रो डैमेज बोनस, अटैक, हीलिंग बोनस, क्रिट रेट। आर्टिफैक्ट तो है नहीं है। आर्टिफैक्ट कहाँ है? नहीं है आपके पास, है ही नहीं। खाली वही फेदर है। फेदर से वो 23 का क्रिट रेट आ रहा है और 89 का क्रिट डैमेज। ऑफसेट ये गॉबलेट है क्या? ऑफसेट, हाँ गॉबलेट। गॉबलेट क्या? एलिमेंट्री मास्टरी, डैंडो डैमेज बोनस है। डेंड्रो डैमेज उधर जहाँ पे एलिमेंटल मास्टरी नीचे दिख रहा है ना, वो क्लिक करके डेंड्रो सेलेक्ट कर ले, एलिमेंटल मास्टरी हटा के। डेंड्रो ये एक पीस मिला मेरे को। अच्छा चल शॉर्ट पर। हाँ तूने जितना बताया तो उतना रेशियो तो ठीक ही जा रहा है। 130। वेपन कुछ और है क्या? देख क्रिट वाला वेपन पिक्चर वगैरह। वेपन ये विडसीड है जो न्यू बुलेट पर दे रखा है। न्यू बुलेट को प्रोटोटाइप दे देना, एचपी और बढ़ जाएगा। क्रिट डैमेज कम हो जाएगा लेकिन। ठीक है चल तू ये बिल्ड सेट कर, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है। अरे सॉरी, जियो लेके जाना था, राइडन लेके चला गया। बता। जियो लेके जाना था मेरे।
Urina, Kazua, Sangi. Okay. आईडी रिव्यू कर देते हैं भाई अभी अभी तो फिलहाल एबिस कर रहे हैं Fallen leaves, adorn my... The tides beckon. Silence! Bow your head. Care your coming was foretold. Dance with me. Bloom as the flowers in Gulabard. Be sanctified. Silence! An oversight on my part. हमारी थर्ड चेम्बर में वही मेन हेल्प हमारी करेगी चीना इसको मरने देना नहीं As one with wind and cloud. The tides beckon. Bow your head. भूल गया पागल भूल गया Wind strike. Silence! The eternal oasis. Time to go. Let the mighty be humble. Settle down. The eternal oasis at long last. Wind strike. Clouds high. The birds call. Shabam! Sorry. अरे यार I जैसियस pushed my... अगर हाइपर ब्लूम कर रहे हो तो सब डीपीएस बिल्ड करो हाँ मतलब हाइपर ब्लूम और बहुत सारी टीम में भी काम आ जाता है सब डीपीएस और बाकी ईएम बिल्ड सिर्फ ब्लूम के काम आता है इसके अलावा और किसी टीम में जल्दी काम ही नहीं आता वो ब्लूम मैंने लीव ही मार दिया था पूरा डोमेन एबिस डोमेन बोल रहा हूँ मैंने तो मेरी ना को ईएम ही बिल्ड कर रहेगा तो अभी तो मैं सब्सक्राइबर के वर्ड में कर रहा हूँ I must remain calm. The tides beckon. मर गया मरते हुए देखना किसको अच्छा लगता है
भाई चलो चलो आ गया आ गया आ गया तीनों को कैसे बचाऊंगा पहले Be sanctified. Silence! The wind knows me. As one with wind and cloud. Bow your head. Strike a pose! Let the world collide! ज्यादा टाइम लगा अभी इसको मारने में इधर उधर भाग Let her rip! Shower me with praise! Time to shine! Wind strike. Fallen leaves. Adorn my night. The tides beckon. Settle down. Bow your head. Let the mighty be humbled. Dance with me. Silence. An oversight. Be sanctified. Bow your head. Get that! Let my name echo in song! Strike a pose! Silence. The tides beckon. Settle down. Time to shine! Sorry! I pushed myself. लिव कर दे वाह पे यार जीना कैसे आ गए रोटेशन आनी चाहिए तो चाहिए था न्यूब्लेट पर ये आ गई भाई नेक्स्ट लेवल Clouds high. The birds call. Be sanctified. Bow your head. Settle down. Your coming was foretold. Wind Strider. Shabam! Let my name echo in song! Strike a Let the mighty be humbled. Bow your head.
eternal oasis at long last. Time to shine! Fallen leaves, adorn my nut. Be sanctified. Settle down. Showering you with praise! Let my name echo in song! Silence. Ah, I see the temperate waters of हीलिंग में मर गया eons. हीलिंग में मार रहे time to shine! Strike them up! Clear the area! As one with wind and cloud. The tides beckon. Settle down. Your coming was foretold. Wind Strider. Here goes! Let the world collide! Let the mighty be humbled. Bow your head. At least you were here to watch. Fallen leaves, adorn my night. Be sanctified. Let my name echo in song! Silence. This is Bow your head. The tides beckon. Silence. let the world collide! Settle down. That hurts. Clouds high. The birds call. Be sanctified. फाइनली Make yourselves at home. Let me read you a verse. Rain outlines your fate. Stand with me. Lightning, arrow, odd, reveal thyself. Shadow. Committed to memory. Witness the power of Gugwa. Grow, grow, grow. This way, Turtle. The Temple of Wisdom.
me weave you a verse. Stand with me! Out of my way! Midnight Phantasmagoria. Roll, roll, roll! Sharing my knowledge. Commit to memory. Yeah! No, my sword! Rain outlines your fate. Witness the power of Gugwa. This may turn a little. By royal decree. Our bond is strong. No, my soul. Rain outlines your fate. Rain cutter. Make yourself at home. This may turn a little. Commit to memory. Rain outlines your fate. Let me weave you a verse. This may turn a little. No! The show begins! Time to go. Silence! May I present? An oversight on my part. Bow your head. Settle down. Shower me with praise! Bow your head. Shabam! Get Wind Strider. time to shine! Yoo-hoo! The tides beckon. Settle down. Strike a pump! Here goes! Justice. The lightning! Killing song! Yep. Stop that! Silence. Bow your head.
एनर्जी रिचार्ज करके It's the air. अभी तक ट्राई कर रहे हो, नहीं करूं? ठीक है, नहीं करता हूं, नहीं करूं ना, छोड़ दूं, मतलब हो जाएगा तो कोई दिक्कत हो जाएगी। नहीं करता हूँ, रहने दो। तो ठीक है, लास्ट चेम्बर जाने की कोशिश मैं कर रहा था। लास्ट चेम्बर उसमें भी शायद हो सकता है 3 स्टार आ जाए। जो दिक्कत होती फर्स्ट चेम्बर में होती। बिल्ड सही कर लेना, थोड़ी बहुत बिल्ड इधर उधर करिए जो, बाकी तो ठीक है। अब इसके लिए इतना मजदूरी कौन करता है? मजदूरी नहीं, काइंड ऑफ स्किल्स बोल सकते हो, मजदूरी नहीं, मतलब वो एबिस करते रहोगे ना तो एक टीम में जो होता है रोटेशन करने में जो बातें होती है, मतलब की स्किल, अल्ट, बर्स्ट, ये सब में हाथ बैठ जाता है आपका। आप अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो कैरेक्टर्स को, एक टीम को अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो, उसका अच्छा डैमेज ले सकते हो, काइंड ऑफ चीज़ें होती हैं। तो आपके पास वैसे, आपके पास अगर C6 भी कैरेक्टर होंगे, आपको खेलना नहीं आएगा तो वही C0 के बराबर है आपका भाई, समझ लो। और जिस बंदे के पास C0 कैरेक्टर है या C1 है, मेरे पास C1 है तो उन्हें तो सीखना ही पड़ता है खेलना। मैं तो बस फन के लिए खेलती हूँ, वो अपना अपना ओपिनियन है। मैं तो डैमेज के लिए खेलता हूँ, मेरे को डैमेज पसंद है, हर एक कैरेक्टर से मैक्सिमम डैमेज निकालता हूँ। देखो मैं अपनी ये देख रहा हूँ नाइदा, मेरी नाइदा पे 416 ही है, ग्रेड भी है नाइदा में, डैंडो डैमेज बोनस। आपको भी सेम बिल्ड करना है, ये बिल्ड कर लोगे हाइपर में बहुत अच्छी काम करेगा। थैंक यू। इस पे क्या ही बोलूं, आपका भी शुक्रिया अपनी आईडी से हमें खेलने देने के लिए। Be sanctified. Silence! Watch out! Shit! Fallen leaves, adorn my night! Bow your head. Dance with me! Feeling lucky? The tides beckon. Time to shine! Not done yet. A proper send-off from the As one with wind and cloud. Silence! Into the wind. Be sanctified.
Bow your head. Coming at ya! Strike Strike to close! A proper send-off! Clouds high, the birds call. Time to shine! The Temple of Wisdom. Witness the power of Kurosawa. Know my sword. Rain outlines your fate. I'll settle this. Stars, shine for me. Committed to memory. Yeah. 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 This may turn a little. Share my knowledge. Rain cutter. Huh? Rain outlines your fate. Stand with me. Cold, mind to command. Yeah. Grow, grow, grow. Witness the power of Kurosawa. Know my sword. Lightning Kurosawa. Make yourself a home. Committed to lift stars, shine for me. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Let me weave you a verse. Huh? Dissipate. Cold, mind to command. This may hurt a little. Yeah, yeah. Yeah. Two star मिल पा Hello. Settle down. Huh. Bow your head. Let the mighty be humbled. Settle down. Let mine make echoing song. Strike. Coming at ya. Ha-ha. Fire. Well, with Silence. The tides beckon. Fallen leaves, adorn my night. Rain cutter. Know my sword. Huh? Stand with me. My guiding stars. Yeah, yeah. Yeah. कुकी आते ही के साथ मर गई मेरे को पता भी नहीं चला कुकी मर गई भाई कुकी भाई मर गई बताओ स्किल डैमेज बोनस 20%.
Windstrider! Shit! Fire! Well, withdraw. Time to shine! Bow your head. The tides beckon. I see everything. Let me read you a verse. Know my sword! नहीं हो पाएगा ना, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। अपना आर्क फर्स्ट खत्म कर लेता हूँ। वापस स्पॉन में नहीं जाना। ये थोड़ा सा टफ होगा, थोड़ा नहीं बहुत टफ होगा। जिरेन स्क्रीन करके भाई कहाँ से जमीन से गायब। आवाज नहीं आ रही, क्या मतलब आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है? आप तो 100% आती होगी। जोर से बोलो। अच्छा और कितना जोर से बोलूं भाई? कहाँ लेके जा रहा है? कहाँ से कहाँ जाऊँ? अब आ रही है, अब तो आएगी। अब कैसे नहीं आएगी? आनी चाहिए, क्यों नहीं आनी? बताओ भाई क्या चल रहा है? गेम चल रहा है न्यू आईडी में, इस पे यार 35 कर रहे हैं। अभी राइडन वाला क्वेस्ट कर रहा हूँ, आर्कन क्वेस्ट। तो राइडन से जाके मार के आता हूँ।
गन ऑफ कर लेते हैं। मेरा तो ड्रैगन बॉल लेजेंड्स चल रहा है। अच्छा गेम है। गेम है कोई। Legend Festival. Another bad one? No, let me try again. Dragon Ball Legend गेम ट्राई करो, देखता हूँ कैसा गेम। मतलब मेरे को ज़्यादा पीसी मोबाइल के गेम अच्छे नहीं लगते भाई। पीसी के गेम मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, मोबाइल के गेम मेरे को पसंद नहीं, रद्दी भर पसंद नहीं। ऐसे तो होगा रन तुम्हारा। You think that's Lady Ai? Oh, no wonder Junior is so excited. She has a really striking presence. तुम्हारे पे लैपटॉप है? हाँ है ना, लेकिन क्या बोलते हैं इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक नहीं है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक है। मतलब समझ रहे हो ना, वो जो AMD का आता है ना ग्राफिक इंटीग्रेटेड वाला, वही है। नहीं चल रहा। बाकी लैपटॉप का अच्छा है, हाई एंड साइड एंड गेम कम से कम ग्राफिक्स पे थोड़ा बहुत इसे चला तो लेते हैं, क्रैश नहीं करता। Keep away from me. I gave up the art of the sword. Please, let me go, I beg you. As you can see, Lady Ai, Average Domon laptop, has persisted in this state for some time now. He appears to see those who have lost to him in duels past, gathered all around him to persecute him. Lady Ai, it must be a possession, right? This is nothing like him at all. In the past, no matter what came his way, he would always face it with a confident smile. I'm sorry. It is clear to me that your sensei is not possessed by any evil spirit. 77 Ultra graphics पे चलाओ भाई। Yes. वो Cyberpunk This is a खुल भी change जाए in the तो बड़ी person बात himself. होगी। Ultra setting को Unable कहाँ to चलाओ? cope with the tremendous pressure he was under, he suffered a spiritual collapse. With his wits impaired, he finally descended into madness. As one who is thrown into the sea, though he fights back desperately against his predicament, it does nothing to prevent his descent into the depths. As for what has triggered this change, I believe it must be the loss of his vision. For to be stripped of one's vision is to be stripped of one's ambition. Stripped of his ambition? But Lady Ai, even without his ambition, why should he suffer such a dramatic change? Nope. How does that explain his descent into madness? Your school practices make Yoshisui art, does it not? Stillness of mind, freedom from all agitation. What a fine notion that would be if any in this world could ever hope to achieve it. There was once one who claimed to be indifferent to rank and reward, and who fled enraged when defeated by his junior. And then there was an aged swordmaster who was aggrieved enough that he crossed blades with a disciple he himself had taught. Then, what of the one who crossed blades with his own sensei and beloved fellow disciple, and defeated them both? Can one truly remain unagitated, of still mind in moments such as these? Lady Ai, I'm not sure I understand. The path of the swordmaster is filled with twists and turns. It is no small undertaking to pursue the position of greatest swordmaster in the world. It requires one to take their sword firmly in both hands and cut down the hopes and dreams of others, even those of one's closest companions. Only a deep commitment to his ambition to become the best made it possible for him to rise above the pain of these encounters, to focus on the way ahead.
परमिशन When कौन that देगा? ambition disappeared, क्या he डोमेन began to VC में doubt आने का? himself. नहीं वो As ड्रैग he कर दो battled तुम। his growing तुम अगर ड्रैग anxiety, VC में he जाओगे ना slowly तो मैं descended ड्रैग into कर the दूंगा state you see him in now. Much like a certain fatally flawed friend of mine. Poor Sensei. To think he's been suffering so greatly. अरे ये तो बताओ किस चीज़ की I'm परमिशन sorry. मांग रहे हो? It's all my fault. मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। किस चीज़ की Sensei. परमिशन मांग किस चीज़ की परमिशन I'm रहे हो? sorry. That's enough. Huh? Isn't that Onsai? Where did he come from? बता रहे हो? Did he follow us the whole way here? Ansai, why are there two of you? Is that you or a ghost? You're here for revenge, aren't you? I knew it would come. I never should have. क्या करूँ? ड्रैग? You're right to assume that my feelings towards you are far from kindly. Hello. But I didn't come here to settle a score. It's been so long now that I made peace with it years कर दिया ago. ना? You did nothing wrong that day. I couldn't face the humiliation. That's why I ran. Song बंद कर दो यार तुम I उस don't बॉट think का एक most काम of the करो people वॉइस you beat along the बॉट way पे would क्लिक करो hold it और against उसकी you. वॉल्यूम लो कर दो On the पूरा ही बंद कर contrary, दो ठीक रहेगा when you cut our ambitions short, we entrusted them to you in the hopes that they might carry you further. Now I know that we can't place our hopes in you any longer, मेरे को आदत लग since चुकी you've है been बैकग्राउंड stripped of में your गाने ambitions सुनने की too. सारा आवाज मिक्स हो रहा But है that is no reason to strip them of theirs. मिक्सी में बैठ Follow the बैठ way करके of the गाने sword सुन all the way to the highest peak. You taught them रहे that. कम कर लो ना बॉट की आवाज कम कर दो पूरी But पूरी what लो if कर one देना day बॉट की आवाज the same thing happens to them? मिक्सी ग्राइंडर I हाँ put everything I had into trying मिक्सर to become ग्राइंडर the सॉरी best. मिक्सी बोल रहा हूँ मिक्सर ग्राइंडर But what if it was all a huge mistake right from the start? If there's a chance they'll end नहीं up तो ये like होना me चाहिए one था day, साउंड I'd rather मिक्सर they stay where ग्राइंडर they are साउंड now मिक्स हो than रहा go है ना any हर further down this path. Have you asked them what they think? Sensei, after you rescued me from the hands of the pirates, I told myself I would follow in your footsteps for the rest of my days. कोई पंच लाइन मारो I can't धीरे know हमारे whether पास I तो will बहुत सारी suffer रहती in my पंच लाइन future as you do now. All I know is that here and now, in the present, I wish to continue. ड्रैगन बॉल लेजेंड्स I के want to लिए keep going बहुत until the लो day that I can स्पेसिफिकेशन stand चाहिए before everyone Oh. with my head held high and बहुत announce लो में हो that I, जाता है like my sensei Domon before me, देखो मेरे पास am तो a कोई ग्राफिक master कार्ड of है ही नहीं ना Meikyo दिक्कत ये Shisui है art. Nanako's far from the only मेरे one. पास कोई ग्राफिक कार्ड है Actually, ही नहीं all of अच्छा us think that way. नाम बता दोगे गेम का नाम ड्रैगन बॉल लेजेंड्स स्टीम पे मिल जाएगी ना मैं देखता हूँ You see? You can place the ambition you once had in their hands. Being stripped of your ambition is something that's never happened to me, so I can't claim to understand it. But I do know what it feels like to have your ambitions crushed. सर्च करता हूँ ड्रैगन बॉल That's what लेजेंड्स happened on the day that you so effortlessly defeated पे me. So, just as I once placed my ambitions onto you, it is time for you to release yours into their custody. You are not in the same position that I was. एपिक स्टोर भी है मेरे पास When I left, लॉगिन मेरे से I खोया had हुआ nothing लॉगिन to करना my पड़ेगा name. But you have a great number of worthy disciples. I understand. I'm sorry to have made you worry for me and for the state of Meikyo Shisui art. I no longer have the resolve to become the best in the world. The emptiness and suffering inside of me will not abate, so I cannot hope to still my mind and be free of agitation. But as your sensei, I shall commit to imparting unto you everything I have learned in my life so far. This is my promise. And I humbly ask Anzai, my senior, तुम्हारे पास ग्राफिक कार्ड नहीं है एंड मेरे You can पास count on ग्राफिक that. कार्ड है I'd be but checking in on you PC occasionally नहीं anyway, है just to make sure you hadn't lost your mind again. But ये I क्या am गोलमाल now है used to the life of a wanderer. I do not belong in the dojo anymore, ग्राफिक कार्ड देके so क्या I कर will रहे हो simply जब stop PC ही by नहीं है once in a while to make sure you aren't cutting any corners with them. Well, तो नहीं समझ don't रहा just है stand there staring at me. कंप्यूटर Say शॉप में काम thank you to करते Lady हैं Yi and then get yourself back home. स्टीम पे नहीं है ये गेम ड्रैगन बॉल सुपर
So even though his ambition was taken away, अच्छा वो RX 580 वाला can सस्ता take से it सस्ता over on ग्राफिक कार्ड his बिट behalf. माइनिंग करने वाले लोग Guess रहते हैं that वो वाला sort of ग्राफिक कार्ड solves मेरे को this one, चाहिए 2-3 हजार में मिल जाएगा तो ले लूंगा Traveler, a moment, please. Lady Yai has some words for you. So, my intuition was correct. The wind that blows from afar carries fresh life to these shores. For us to meet now is premature. अभी सबसे अच्छा Nevertheless, ग्राफिक कार्ड कौन है you अंदर set foot on these islands at अभी तो सबसे precisely ज्यादा the right ग्राफिक कार्ड moment. अंदर बजट मेरे को लगता है ना सबसे ज्यादा अभी आ रहा है इंटेल वाला जो आया है न्यू आर्क सबसे अच्छा ग्राफिक कार्ड I have high hopes for you, child. Don't disappoint me. Ooh, Lady Yai seems to have taken a real interest in you. She seems super mysterious. Paimon's so curious what she really meant by all that. DBL We can come back to it another time. For DBL now, नहीं we मिलेगा should go स्क्रीन report में back to Miss RX Kamisato. 9060X 9016X ये कौन सा ग्राफिक कार्ड है भाई पहली बार नाम सुन लिया नेक्स्ट लेवल ग्राफिक कार्ड दिखा रहे हो हाँ Nvidia का भी न्यू वाला ग्राफिक कार्ड आने वाला है ना 5090 ग्राफिक कार्ड भाई वो GTA 5 के लिए काफी होगा वो ग्राफिक कार्ड उसी के साथ GTA 5 भी आ जाएगा GTA 5 कितना है 2028 27 26 में कब आ रहा है GTA 5 नहीं GTA 6 सॉरी Oh, Ayaka! Guess who fulfilled all your wishes? GTA 6 कब आ रहा है पता है किसी को Huh? 2025 एंड में आ रहा है स्टार्टिंग में आ रहा है ये भी खाली बता दो मैं तो लगता है एंड में आएगा 2025 के एंड में Traveler, Paimon. It is a pleasure to finally meet you both face to face. जून में आ रहा है I have heard all about how you helped our three friends. 5 महीने My बाद आ रहा है भाई sincerest GTA thanks to 6 you. रेडी रहो सबको पीसी उसी रेडी करके Short of getting them their GTA 6 visions खेलने back, के लिए it seems like there's no way to really help them. Ayaka, ब्लू how स्टिक है come this time नहीं you ब्लू get to स्टिक तो come out नहीं है and meet लेकिन us in मैं person? दूसरा ये एमुलेटर रन करता हूँ Because now that you have done the three things I एलईडी प्लेयर asked of यूज you, करता हूँ मैं I ब्लू स्टिक नहीं consider यूज you करता to be क्योंकि my बहुत ज्यादा friends. हैवी है वो As you will observe, I dispense with the screen for Toma also. Mm-hmm. ब्लू स्टिक नहीं यूज Wait करता a क्योंकि वो बहुत ज्यादा second. हैवी एलईडी But प्लेयर isn't Toma ओके उसमें your, भी चल जाएगा servant? अच्छा Paimon's ड्रैगन बॉल happy to लेजेंड help and all, डीबीएल but Paimon sure as heck did not डीबीएल sign up ड्रैगन to बॉल be a लेजेंड servant. भाई ये तो शॉर्ट करके मत किया अगर समझ ही में नहीं आता Paimon, you are most entertaining. Toma is इधर first मेरे and को नहीं समझ foremost में my आती शॉर्ट friend, वाली and was so DBL. before he ever became my attendant. Oh, ड्रैगन बॉल then. सुपर ड्रैगन बॉल लेजेंड सुपर you बोल seem रहा pretty हूँ ड्रैगन different बॉल out in the लेजेंड्स open compared to how you are behind the screen. अबे स्ट्रीम अटक गई मेरी क्या बंद हो गई तो Thank you both kindly. अटक गई Back to the matter at hand. You have now witnessed the pain of those deprived of their और जिरेन visions. बताओ क्या हालचाल What are तुम्हारे your feelings on what you have seen? हालचाल बताओ तो कुछ तो बोलो यार Perhaps in the eyes of a deity such as the डिस्कॉर्ड में भी almighty आके बैठे Shogun, हुए हो the lives of those who inhabit the world are inconsequential. Thunders roar, lightnings flash, the winds assault, and the rains descent. All these things take place with no regard for the feelings of the GTA common 6 people. But चलाने I में घर believe that जाएगा surely घर नहीं you भाई पूरा understand मोहल्ला what they जाएगा must endure. पूरी कॉलोनी चल जाएगी पूरी एक जो फ्लैट वाली बिल्डिंग होती है ना वो चल जाएगी कुछ ज्यादा ही हैवी है GTA 6 It seems that perhaps now you can appreciate my feelings on all of this. In which case, एक्चुअली तो मेरे को perhaps you GTA would be 5 willing to खेलना reconsider मन your है stance? पर GTA 6 You भी will? खेल लेंगे Really?
अंबानी जाएगा कुछ ज्यादा हो गया अंबानी जाएगा Naturally. All right, bravo, my lady. You were right all along. See? I told you she wouldn't reject them. I'd placed my trust in the right person after all. Now then, given that the remainder of our discussion pertains to matters of a more confidential nature, redeem लगाने वाला हूँ perhaps we can move वो to the न्यू ब्लड का Komori tea redeem house? लगाऊंगा मैं वो We साइलेंस ought और not to involve other वो सारी members of चीजें the जो रहती हैं Yashiro न्यू ब्लड की Commission. फनी चीजें वो सब लगाने वाला हूँ redeem में मजा आएगा वो सब चीजों को लगाऊंगा ना कमांड डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में देख लेना अभी नहीं होगा अभी नहीं लगा रखा है मैंने लगाऊंगा कह रहा हूँ अभी लगाया नहीं Please continue without me. I'll keep watch. So, what's the deal with this place anyway? What makes इसके it लिए your पॉइंट्स भी favorite चाहिए ना reading अपने spot? पॉइंट्स चेक कर लो This is land that was क्या gifted to the redeem? Yashiro Commission by the Shogun. अरे वो The memes Kamisato रहते हैं clan has the exclusive right to plan, build, and repair any property on पॉइंट्स this आप चेक land, करो पहले अपने and even to allow or deny access. एक्सक्लेमेशन Such पॉइंट्स privileges लिखो exist आपके due पॉइंट्स to the शो करने Yashiro लगेंगे Commission's चेक role करो in चेक करो managing ceremonial affairs. Oftentimes, it is not appropriate to discuss details in front of स्पेस नहीं दो bystanders. एक्सक्लेमेशन के बीच में Oh, पॉइंट्स come में on, एस Gretchen. लगा दो Gotta keep a bit of mystery, right? स्पेस नहीं दो और पॉइंट्स में Once एस the लगा number दो of ceremonial अब टी मिस affairs कर दिया conducted in the city began to decline, our forebears built a tea house here. Only members of the Yashiro एस Commission are लगाने के permitted बाद to टी come and हटा go दिया as they please. दोनों लगा Makes sense. हाँ ये Perfect सही है place for a secret base. In any case, we can talk freely here. I presume you have a few questions that you wish to ask me? 2000 पॉइंट्स है आपके पास हाँ तो मैं एक रिडीम का रख दूंगा कम से कम 200 या 300 एक रिडीम का रखूंगा I've अब seen कूल her डाउन on कम but से कम तो only a 5 few मिनट रखूंगा कूल occasions, डाउन सही रहेगा most of them formal ceremonies. She inspires awe, commands respect, वरना and कूल डाउन नहीं exudes a रखूंगा sense तो of बाद में स्पैम absolute करते authority. रहेंगे भाई But as I recall, there was something कमीने else दोस्त लोग हैं about मेरे her that आते थे struck me स्पैम even करने more लगेंगे deeply. It was her almost complete lack of any emotion. In that sense, she appeared to me to be less of a ruler and more of, well, an executive official, I suppose. Focused उससे exclusively मुझे on her क्या single फायदा goal of मुझे क्या implementing मिलेगा eternity, बस मजा मिलेगा acting मेरे accordingly को परेशान without करके feeling. नहीं परेशान करना है ये कौन सा क्वेश्चन था भाई मेरे सर के ऊपर से चला गया The issue is this. For the vast majority of people, the Vision Hunt Decree is something that has no implications whatsoever. After all, it is but a tiny minority of people who receive visions. Moreover, it is not unknown for visions to spark jealousy in others. Because of this, the attitude of most people towards the Vision Hunt Decree is one of indifference. How can they be like that? Paimon's getting mad. Nevertheless, in addition to us, there is also the resistance on Watatsumi अगर न्यूरेट Island. लड़की होता तो क्या होता वही होता You mean like an army fighting जो against हर the फीमेल decree? कैरेक्टर के साथ होता आ रहा है Yes. Many who have lost or fear losing their visions have rallied together under Sangonomiya on Watatsumi Island to form a resistance group. To say a little more about समझ रहा है ना? Sangonomiya, historically, हर एक फीमेल there has कैरेक्टर के always साथ been some होते आ रहा है वही conflict होगा between them and the shogunate of Narukami Island due to their different कौन सा belief लैंग्वेज में लिख systems. के भेजा है इसने But I do wonder whether there क्या may be लिख के some भेजा है other agenda behind their resistance movement, beyond merely fighting the ट्रांसलेट कर Vision Hunt सकते हैं Decree. गो टू द चैनल नहीं ट्रांसलेट नहीं कर सकते वैसे क्या लिख के क्या भेजा है बताओ ना Of course, we have tried on numerous क्या लिख के भेजा है occasions. रशियन में है Unfortunately, each Russian time a language, yeah. proposal to repeal the decree arrives at Tenshukaku, it is promptly vetoed by both the Tenryo Commission and the Kanjo Commission, and subsequently scrapped. कौन सी They लैंग्वेज है बता दे invariably भाई adopt a stance of unconditional support for the shogun's decisions.
They have no interest in discussing नहीं पढ़ने की anything. कोशिश करो. It almost makes one क्या wonder पढ़ने की whether कोशिश they करो? had a मेरे को hand तो in the समझ में ना आ Shogun's रहा. sudden decision to issue the Vision Hunt decree. अच्छा ओरिटिक्स मैकेनिक डेनिस कोडिनल नहीं पढ़ा जाएगा मेरे से भाई, नहीं पढ़ा जाएगा मेरे लिए. इंग्लिश वर्ड भाई बहुत हार्ड रहते हैं, नहीं पढ़ा जाता, प्रोनाउंस नहीं होता. Oh? What would you like to know, Paimon? Have you got a plan yet to fight the Vision Hunt decree? ओरिटिक्स मैकेनिक्स डेनिस. To be honest, we do not. डेनिनिक्स है ना. What? कोडिनॉन. Please, do not forget that challenging the Vision Hunt decree is tantamount to challenging a deity. Coming to terms with that is already a difficult step to take. ओरिटिक्स मैकेनिक्स डेनिस. So what are we gonna do? Well, for the moment, all we can do is try and reduce the harm that is being caused by this decree. For example, by providing vision bearers with safe refuge, or manufacturing counterfeit visions for them as a contingency measure. You're telling Paimon that there are people out there who can make fake visions? Don't underestimate the talents of the craftspeople in Hanamizaka. To the naked eye, their counterfeits are indistinguishable from the genuine article. The problem we are facing right now is that Master Masakatsu, who was providing us with counterfeit visions, has recently been arrested by the Tenryou Commission. Darn! So they found out about it? Ugh. Yes. We knew it was not a long-term solution, and that it was only a matter of time before it would be exposed. But we cannot simply abandon Master Masakatsu. Exactly. I feel the same way. But given mine and Toma's identities as part of the Yashiro Commission, breaking him out of prison would risk dragging down the reputation of the entire Kamisato clan should we be caught. That would only serve to cast suspicion on any future activity we might seek to attempt. By no means do we intend to place the burden of such a task on your shoulders alone. When you are ready, go to Hanamizaka and look for a fireworks shop run by the Naganohara family. There, you will find someone who can help you. जिंदगी में कोई एडिटर चाहिए. हाँ, काइंड ऑफ वीडियो एडिटर मेरे को चाहिए होगा जो फनी वीडियोस एडिट कर सके मेरे अलावा भाई. लेकिन मेरे को उसके लिए देने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास, तो थंबनेल तो खुद ही बनाता हूँ अपने. ज़्यादा नहीं, बड़ी वीडियो नहीं एडिट करने के लिए बोलूँगा, बस शॉर्ट्स एडिट करने के लिए बोलूँगा. फनी शॉर्ट्स बना सकते हैं बस. यही बात बोल रहा था. Just hand it over. You don't want any trouble with me. If you think your elemental powers are enough to resist the Vision Hunt decree, then you'd better think again. Believe me, you're not the first of your kind we've encountered, and we've seen the same unpleasant outcome time after time. You'd best save yourself the trouble. Can't you make an exception? I just got this vision. I won't even use it, I promise. So this is the Vision Hunt decree in action, huh? We can't just sit around and watch things unfold, can we? वीडियो एडिट करते हैं. Hey, wait. या सिर्फ Huh? There's someone trying to get our attention. एडिट भाई एडिट. Come on, this way. एडिट करते हो. What's going
भाई हो ना? Shh, quiet. गोको को बुला लूंगा Just sit फिर। tight and watch for a moment. Hey, Both. this isn't right, you दोनों know. करते हो? Just because you don't have a vision doesn't mean you can sit back and watch others in trouble. Huh? नहीं मेरे को बस चाहिए कि have a vision. आप ये कर सको मेरे Don't ला keep your voice down. I won't have one क्या much कहते हैं longer. शॉर्ट्स एडिट करना है मेरे बस। All right, ये all चाहता हूँ। right. लाइक Here, एक यूट्यूबर उसकी तरह मेरे को एडिट कराना होगा, तो Wise इसे अगर choice. एडिट कर सकते हो All आप, right, तो बहुत let's go. खतरनाक बात होगी फिर। मैं दिखाता हूँ, मैं भेजता हूँ उस यूट्यूबर की मैं शॉर्ट्स भेजता हूँ, उसकी तरह मेरे को एडिट कराना है। Doesn't he know what could happen to him after losing it? This अगर is आप your उसे fault. एडिट कर You're the सकते one हो who तो stopped अच्छी us बात from है, वरना interfering. Many Okay. thanks, Miss Yoimiya. If you hadn't swapped me a fake just now, I'm sure I would have lost it. No worries. You put on quite the convincing performance. Oh, so that's what's going on here. And to think Paimon was about to unleash Paimonial wrath on Miss Yoimiya. Sorry about that. Think nothing of it. I could tell from your reaction we were on the same Wow. side. You just didn't know it, you know? फ्रीज हो गया, विंडो ही फ्रीज हो गई मेरी। Oh, right. Allow me to introduce myself. I'm Yoimiya, the current owner of Naganohara Fireworks. It ain't much, but it's honest work. Great to meet ya. Practically everyone on Hanamizaka knows Yoimiya. She's the queen of the summer festival. Without her and her fireworks, summer on Narukami Island just wouldn't be the same. Whoa, that's quite the introduction. Paimon loves fireworks. Not gonna ooh, you know what? I am not gonna ooh. Stop it, Hanjiro. You'll embarrass me. As for thanking me, you'd be better off thanking Master Masakatsu. He's the one that gave me the fake visions in the first place. His handiwork allowed me to keep my own vision. I can't even imagine trying to run the business without it. Ugh. Yes, Master Masakatsu is a good man. It's too bad good people seldom get the recognition they deserve. Master Matsukatsu? Huh? Do you guys know him too? You don't say! Then it sounds like the Shirasagi Hinagami has a plan. Awesome! I've been thinking about breaking him out too recently. But if I just march straight in there by myself, I'd probably get Miss Kamisato in a whole heap of trouble. So, what about if I join you instead? Sure, welcome to the team. Ayaka told us to go look for help at a fireworks shop. She must have meant you. Seems like I finally got a new job to do. Besides hiding vision bearers in my shop, that is. So, Master Masakatsu is being held at the police station. I've already surveyed the area and found a way in. Jiren? Kind of ऐसे ही करानी है मेरे को। हो जाएगा तो Seems we've got the right person on our team. Not bad, huh? Let's go as soon as everyone's ready. Don't worry, Master Masakatsu. We're on our way. Time to break him out. बस वो एनिमे वाला जो उसने लगा रखा है वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को वैसे एडिट करा था, खतरनाक लगता है। कुछ भी बात बोल रहे तो ऊपर में एनिमे का एक फिगर आ रहा है जो तुम्हारे एक्शन के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिस तरह के तुम बोल रहे हो उस तरह के वो एक्शन कर रहा है। कुछ ज़्यादा ही खतरनाक एडिटिंग है, लेकिन उसमें लगता है आई थिंक टाइम लगेगा बहुत एडिट करने में, मेहनत है भाई काम में, मेरे को तो लगता है मेहनत है बहुत। इस बंदे की सारी वीडियो देखना आप, इसके सारे वीडियो ऐसे एडिट है, खतरनाक लगते हैं। ओहो, कैसा लगा? ये हो जाएगा, बट किसने स्कॉट? मैस्कॉट तो मेरा न्यूलेड है, वही है मेरा मैस्कॉट। मतलब इसमें
मतलब इसे मैस्कॉट नहीं लेके जाना है इसमें, मतलब मल्टीपल एनिमे के जो, मतलब मैं जैसा बोल रहा हूँ ना, तो उसके ऊपर एनिमे के जो कैरेक्टर्स के मतलब ये जो रहते हैं ना, क्या बोला जाए। हाँ मतलब उसने बोला कि चाटे ही चाटे, वैसे मतलब वो चाटे वाला एनिमेशन। हाँ एनिमे के क्लिप्स वैसे ऐड करने हैं, वो खतरनाक लगता है मेरे को। बस वही चाहिए मेरे को बस, और फालतू की चीजें मेरे को नहीं चाहिए। हाँ ये बिल्कुल हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं। ये बस GIF है भाई। हाँ वो GIF है, हाँ वही तो GIF उठाओ और पेस्ट कर दो। Now that we're inside, this place is a whole lot creepier than Paimon काइंड ऑफ, लेकिन imagined. वर्ड्स के लिए परफेक्ट GIF ढूंढने में टाइम लगेगा लेकिन। As long as we stay quiet, we've got a good chance. I certainly wouldn't want to end up locked away in here. Let's find Master Masakatsu and get out of here. About Genshin. Should split up. I've got a little present to prepare for Master Masakatsu. काइंड ऑफ कोई फनी क्लिप रहा तो उसको उठा करके, You sure? Yes. या फिर तुमको कोई फनी क्लिप लगता है तो तुम कर देना, समझे ना मेरी बात। हाँ बिल्कुल। स्क्रीन रिकॉर्डिंग कौन करेगा? यही दिक्कत है। Speed of light. मेरे लैपटॉप में है, चेक करना पड़ेगा। मैंने गेम्स बहुत सारे डाउनलोड करके रखे हैं। Cool it. अच्छा मेरे को अच्छा सॉफ्टवेयर बताओ ना जिससे एडिट कर सकूं मैं। आप मेरे को बस सॉफ्टवेयर का दिक्कत हो रहा है, मैं खुद से ट्राई कर सकता हूँ वीडियो या वही काइंड ऑफ। Withdraw. वीडियो एडिटिंग के लिए अगर लाइव है जरा तो मोबाइल पे बहुत सारे हैं और पीसी में भी बहुत सारे हैं। पीसी में मेरे को वो वाले चाहिए, प्रीमियम वाले। Something shaped like Magatama in order to open it. एलाइट मोड के लिए सबसे बेस्ट फोन रहेगा। Everybody stand back. Get to the chase. वो वाला Speed of light. I dare you. Show me what you've got. With sword comes shadow. Dodge this. Speed of light. Don't blink. Hey. Allow me. Strike first. कौन सा था? अरे भाई प्रीमियर प्रो भाई बेस्ट है। हाँ ठीक है, उसका लिंक मेरे पर भेज देना, ठीक है? वो वर्ड मत बोलना, लिंक भेज देना, ठीक? प्रीमियम प्रो का लिंक, समझ रहे हो ना? ट्रैप लगा हुआ है इधर। Let's light it up. Let's dance. Incoming. I've lost. This wall looks a bit odd. Maybe there's some special trick to it. These guys seem a lot tougher than usual. Paimon wonders if that armor over there has anything to do with the source of their strength. Cool it. Speed of light. Let's light it up. Freeze. देखो भाई भेज। Dodge this. इसमें कोई दिक्कत नहीं ना होगा, आराम से इंस्टॉल हो जाएगा ना? अगर हमारा खत्म होगा तो हो जाएगा। लैपटॉप के ऊपर हो जाएगा। हाँ
सडनली विजडम 0 हो गए भाई। द हेल 1000 तो कम से कम करा दो, 1K हो जाएंगे। चलो ठीक है, इतना काफी है। बंद कर रहा हूँ।